मैंने आपको दो लॉज पढ़ाए, लॉ ऑफ Yes, वेरिएबल प्रपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। sir. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में हमने पढ़ा कि दैट लॉ अप्लाइज इन शॉर्ट रन व्हेन सम फैक्टर्स आर changed and some remain constant. What is the effect of change in factors, some factors, to the total production and marginal production that we study in law of variable proportion? वो हमने law of variable proportion में सीख लिया। तो law of return scale जो कल हमने पढ़ा, yesterday we discussed, that was the law which is applied in long run when all factors are changed in the same proportion. So proportion between the factors remains the same. So उसमें हमने पढ़ा है law of return scale में when all factors are changed in the increased in the same proportion, the marginal product first increases, then remain Yes, sir. constant. Constant. Yes, Diminishing. ultimately decreases. Finally decreases. Yes, sir. The total product first increase at increasing rate, then at constant rate, and finally at decreasing rate. But Yes, sir. there was one difference, main difference between ak difference is law of variable proportion is the law of return scale is here. कि law of variable proportion मज या short run मज उस marginal product गसान zero, negative. Yes, sir. मगर law of return scale मज we do not see marginal proportion, marginal productivity remains goes to zero, it reaches to zero or it follows to negative. Negative which is that much. Okay. Now we have two things here. One is returns to a factor and returns to scale. Yes, In case of short run, when some factors are changed and some remain constant, there is returns to a factor. Yes, sir. When there is long run, there is returns to scale because there is Scale. change in scale, change in size of plot, change in factors in the same proportion, change in all factors in the same proportion. So you first underline what is returns to a factor. Returns to a factor. Returns to a factor. What is returns to a factor? You write down. Factor. When some factors, sorry, ये ऐसे लिख लीजिए आप. Returns to a factor मैंने आपको पढ़ाया. Yes, sir. ये मैंने आपको पढ़ाया. Returns to a factor and returns to scale. ये मैंने एक लेक्चर में दे दिया है आपको. So here यहाँ भी थोड़ा रिवीजन हो गया. यहाँ हमें डिस्टिंग्विश करना है. आप लिख लीजिए डिस्टिंग्विश बिटवीन. तो पहले अंडरस्टैंड होना चाहिए जो मैंने पहले लिखा ना, रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल. रिटर्न्स टू अ फैक्टर अप्लाइज इन द शॉर्ट रन एंड रिटर्न्स टू स्केल अप्लाइज इन लॉन्ग रन. हाँ, रिटर्न्स टू अ फैक्टर में भी तीन स्टेजेस हम देख सकते हैं. डिस्टिंग्विश बिटवीन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. आज का हमारा टॉपिक ये है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. Increasing returns to scale. Yes, basic हमारा core issue है returns to factor and returns to scale. फिर इस returns to factor में तीन चीजें आती हैं. Increasing returns to a factor, constant returns to a factor and diminishing returns to a factor. इसी तरह इसमें भी तीन चीजें आती हैं returns to scale में. Increasing returns to scale, constant returns to scale and diminishing returns to scale. पहले हम डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू? ये तो सेम लग रहे हैं बट देयर इज डिफरेंस. यस सर. यस, लिखिए आप फर्स्ट इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. एक बात मैं आपको कहूंगा, इस वक्त घड़ी दिखा रही है मेरी लैपटॉप की 11:16. अगर ये प्रोलॉन्ग हो गया क्लास, अगर ये लंबा हो गया मोर देन 40 मिनट, मोर देन 40 मिनट, तो फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा. आप भागना नहीं.
ठीक है सर। अगर ये खुद ब खुद मीटिंग एंड हो गई ना तो मैं फिर से Yes, sir. ये ज्वाइन करूंगा, आप भागना नहीं, आप फिर से दूसरी बार इसको ज्वाइन करना, जो मैंने अभी 11th वालों के साथ किया, उनको मैंने 1 घंटे का क्लास ले लिया। Increasing returns to a factor. What is increasing returns to a factor? Returns to a factor, as we know, it applies in the short run when some factors are constant and some remain, some are changing. So when some factors are increased and some remain constant, some remain constant, the marginal productivity increases. The marginal product increases, and total product increase Increasing. at increasing rate. Yes, sir. Increasing rate. At increasing rate, it is called a Increasing return. increasing returns to a factor. It is called a increasing returns to a factor. So basically marginal productivity किसकी हम स्टडी करते हैं यहाँ, increased factor, variable factors की. So here some factors are variable and some are fixed. Some factors sir. are variable and some are variable factors and some are fixed factors. Some are fixed factors. जो फिक्स्ड फैक्टर्स है उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हम नहीं देखते हैं, हम देखते हैं वेरिएबल फैक्टर्स की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. So when the marginal productivity of variable factors increase and total product increase at increasing rate, it is the case of increasing returns to a factor. इसको कहते हैं increasing returns to a factor. For example, इस तरह हम इसका जो टेबल है वो इस तरह बनाएंगे, वेरिएबल फैक्टर या वेरिएबल फैक्टर्स and marginal product, and you can see total product also. When there is marginal product, there is also total product. For example, variable factor 1, 2, 3, 4, 5. पहले हमने एक लेबर लगाया, फिर 2 लगाए, फिर 3 लगाए. एक लेबर ने कितना काम किया? फॉर एग्जाम्पल उसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 10 था, इसका समझो फॉर एग्जाम्पल 15 है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, इसका 20 हो गया, फॉर एग्जाम्पल इसका 25 हो गया, इसका 30 हो गया. सो जितने हम लेबर ज्यादा लगाते, हर एक लेबर अपनी प्रोडक्टिविटी ज्यादा दिखाता है. पहले लेबर ने 10 चीजें बनाई, दूसरे ने 15 बनाई, तीसरे ने 20 बनाई, चौथे ने 25 बनाई. तो एज वी इंक्रीज द labor force or a variable factor or 1 or 2 variable factors, their marginal productivity increases. Yes, sir. So this is the case of increasing returns to a factor. Here some factors are fixed, some factors are fixed factors, some are fixed factors. For example, fixed factors is machine. We have machine 1 1 1 1 1. This is machine, this is fixed factor, this is fixed factor. They do not change, it remains. These fixed factors remains same, they remain same. So when we have marginal product, we can calculate total product. हम total product भी निकाल सकते हैं. किस तरह? पहला marginal product पहला total product होता है. At the first stage, the first marginal product is first total. Then we add up the marginal product, because total product is always sum of marginal product. This total product is sum of marginal product, sum of marginal product. तो यहाँ क्या? यहाँ sum of ये हो जाएगा 15 plus 10 25. अब हम इन दो को करते हैं, इन दो को है 20 plus 25 it is 45. 45 plus 25 5 गए 10 8 4 5 70 77 गए हाथ. So this is total product. Yes, sir. This is total product. वजन ऐसे बनावे marginal products करूं in case of increasing returns to a factor. तो किस पर बनाओ? Very easy. अगर O एक्स हाई ऐसे variable input the OY high as marginal product, OY high as marginal product. ठीक है? Yes, sir.
अगर marginal productivity curve is like this. As variable input increase, marginal product increase. This is the marginal productivity line. Yeah, I see increasing returns. This is increasing returns to a factor. Increasing returns to a अगर increasing returns to a factor as total product करो किस as total product करो किस as OX shows variable input Sir, see the same. बस थोड़ा फर्क. Yes, sir. So it's like this in this way. So it's how increasing returns. This is total product line. This is increasing returns to a factor. Here total product increase at increasing rate. Total product increase at increasing rate. Okay. Yes, sir. This is the case of increasing returns to a factor. Increasing returns to a factor. It's a same case, increasing returns to scale. Which is that different? All factors are changed in the same proportion. Here, some factors are changed and some remain constant. But in case of that, ये हो गया? ये हो गया? Yes, sir. अगर जल्दी जल्दी जो तेल स्क्रीनशॉट तो ला इतनी क्या पता है? Yes, sir. Yes, sir. अगर तन बोले को इस increasing returns to scale क्यों था ऐसा है? पास मस्त क्या definition दे मो इस? Increasing Returns to a scale. scale. All factors. अथार क्या चीज़ रात है? Sir, रात थोड़ा कम. नहीं चक्कर. Allah. ये क्या बगैर इस कराएं निम्काइम खर्चा काटूं बट Sir, बहुत ही रात गए. when all factors are increased in the same proportion. In the same proportion. अच्छा है ना? When all factors are increased in the same proportion, that is scale of production changes. Scale of production changes. The marginal product increases and total product increase. Same situation increases at increasing rate. It is called Return to scale. increasing returns to scale. Yes, sir. Increasing returns to scale. यथ मस क्या छ इस काम करन सो सिंपली ये सारी फैक्टर एक्सचेंज कर या इंक्रीज कर in the same proportion marginal product gets increase the total product gets increase at increasing rate. This is the case of increasing returns to scale. यथ मस इस मामूली चेंज करन यथ मस इस लिखा ये तो scale of production. We have marginal product and we have total product. Who told us that put you guys yet? Come for a guys, eh? Picture. Agar then scale of production 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Number S. It's a put for example 5, 10.